Yamunatira Vanachami Yamunatira Vanachami Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Punya Bihari. Now reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 5, Vidura's talk with Maitreya. It's text 13 or 14, because there are two verses here. 13 or 14? 14. Text 14. Hare Krishna. Hare Krishna. So, His Holiness Prabhava Swami Maharaj का हम बहुत स्वागत करते हैं ISKCON BHEL टेम्पल में। महाराज के बारे में कुछ हम हमारे शुद्धिकरण के लिए बताना चाहेंगे। महाराज का जन्म 1916 में बेल्जियम में हुआ था। उसके बाद महाराज 1992 में ISKCON के संपर्क में आए। 96 में महाराज का फर्स्ट इनिशिएशन हुआ। 98 में फर्स्ट इनिशिएशन, तो 96 में महाराज ISKCON बांग्लादेश बेल्जियम में महाराज ने ज्वाइन किया। और इस तरह महाराज की जो सेवाओं को देखकर और उनके भक्ति लाइफ में आचरण को देखकर 2015 में महाराज का संन्यास दीक्षा हुआ। उसके अलावा महाराज इस तरह अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं, प्रचार कर रहे हैं और पढ़ाते हैं एज ए टीचर। तो महाराज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें महाराज के द्वारा इस श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। महाराज को हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की जय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jyamudiyayat Nastabhesi Yabhadesu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamastoke Bhakti Bhavati Naistiki Natta. So we'll first read the Sanskrit. Tancho yasochan avido nishuche. Tancho chachochan avido nisuche. Hare katayam vimokam angena. Kshino te deve nimisastu yesam. Ayurvritavadakati smritinam.
Tansho sasocham avido nesoche. Are katayam vimukam mangena. Kshino te deve nimishastu yesam. Ayo vritavatakati smitinam. Tansho sasochana vidona soche. Hare katayam vimukam mangena. Kshino te deve nimishastu yesam. Ayo vritavatikati smitinam. Chancho chacho chan avido no shoche. Hare katayam vimukam mangena. Kshinoto devo nimishastu yesam. Ayo vritevadakati smitinam. Tanso chacho chan avido nasache. Hare katayam vimukam mangena. Kshinoto devo nimishastu yesam. Ayo vritevadakati smitinam. Tansho saso chan avido nasache. Hare katayam vimukam mangena. Kshinote devo nimishastu yesam. Ayo vritavadagati smitinam. Mataji, please. Tansho chacho cham avido nasache. Hare katayam vimukam mangena. Kshinoto devo nimishastu yesam. Ayo vritavadakati smitinam. Will someone translate? Yeah? What do we do with the word-for-word translation? You will do it? You can, word by word translation you can read. Yeah. Then after. Tan, all those, socha, pitiable, socham, of the pitiable, avedaha, ignorant, anuchoche, I pity, are, of the Lord, katayam, to the topics of vimukan, averse, angena, because of sinful activities, ksinoti, decaying, deva, the Lord, animisha, eternal time, to, but, yesam, of whom, ayo, duration of life, vrita, uselessly, vada, philosophical speculation,
Gati, ultimate goal, Shritinam, of those following different rituals. Translation and purport by Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. O sage, persons who because of their sinful activities are averse to the topics of transcendence and thus ignorance of the purpose of the Mahabharata Bhagavad Gita are pitied by the pitiable. I also pity them because I see how their duration of life is spoiled by eternal time while they involve themselves in presentations of philosophical speculation, theoretical ultimate goals of life and different modes of ritual. Translation. हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आता है, क्योंकि उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। So I will read the purport first in English. It's not long, and then you can read in Hindi. That's okay. I can read directly in Hindi also. Okay, good. You can. तात्पर्य: भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी, रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार औपचारिक रूप से खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में करते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी हैं। वे दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनमें भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सत्गुण के भी ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि श्री भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में स्थित होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति, जो जीवन का असली उद्देश्य है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और श्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं, जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि वे दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। Om Jnanatimanasya Jnanasya Sakshrimritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shicitayamanovistam Staptam Yena Bhutale Svamrapkadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shiru Shiyuda Padakam Shiram Vaishnavam Sha
Shri Rupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivishakam Vitam Sha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavani Sutadevi Pranamama Haripriye Vankha Kalptavasha Kripa Sindhabevasha Patnam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Nama Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Prasatani Srila Prabhupada Ki. So after having met Uddhav, Vidura has continued his pilgrimage and he came at Hathwar. तो उद्धव से मिलने के पश्चात विदुर जो है वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं. So that is mentioned on the first verse of this chapter. He reached the source of the celestial Ganges river, Hathwar. पहले श्लोक में बताया गया किस तरह से जो परमेश्वर भगवान हैं वो जीवों के हृदय में रहते हैं. And that's where Maitreya Muni was residing. गंगा के उद्गम पे जो मैत्रेय मुनि रहते हैं वहाँ पे वो गए. Before Vidura had associated with Uddhav, who was a very ecstatic devotee. विदुर मैत्रेय मुनि से मिलने से पहले विदुर उद्धव से मिले जो कि बहुत ही उन्नत भक्त हैं. And he could see that he was completely absorbed in love of Godhead. और वो देख पाते हैं किस प्रकार से जो उद्धव हैं वो भगवान के प्रेम में पूर्ण तरह से लिप्त हैं. In a deep devotional mood, there Uddhav gave a summary of the main of Krishna's incarnations to Vidura. तो कृष्ण प्रेम में आप्लावित होते हुए जो उद्धव हैं वो भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हैं विदुर से. Vidura had been 30 years on pilgrimage. Vidura had been on pilgrimage for 30 years. जो विदुर थे वो 30 वर्ष से तीर्थ यात्रा पे थे. After Duryodhana has tossed him out of the palace, जब दुर्योधन ने विदुर को महल से बाहर निकाल दिया, then Vidura saw it as the hand of Krishna. तो विदुर ने इसको भगवान के द्वारा ही आयोजित समझा. To make him free from this to make him free from this impious association of Duryodhana, Dhritarashtra and all the palatial politics. उन्होंने विदुर ने भगवान का आयोजन समझा कि किस प्रकार से भगवान को ये जो दूषित संघ है दुर्योधन और उनके अन्य लोग और जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उससे दूर ले जाने का एक आयोजन समझ लिया उन्होंने. So when Duryodhana threw him out of the palace, Vidura saw two energies. तो जब दुर्योधन ने विदुर को घर से बाहर निकाला तो विदुर ने दो शक्तियों को देखा. He saw the internal and the external energy of Lord Krishna at the same time. उन्होंने भगवान कृष्ण की अंतरंगा और बहिरंगा दोनों शक्तियों को एक साथ देखा. From the side of the external energy, he saw how Krishna, through the three modes of nature, was bewildering Duryodhana. बाह्य शक्ति के रूप में
विदुर ने देखा कि किस प्रकार से जो दुर्योधन है भगवान की जो 3 गुण शक्तियां हैं उसके द्वारा प्रभावित है। And he saw at the same time how Krishna, through his spiritual energy, made arrangements that he could leave this entanglement of politics and the palace. और कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत विदुर ने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी उनके लिए, जिससे वो ये जो दूषित तत्व है पॉलिटिक्स है उससे दूर चले जाएं। So Krishna made him now free to concentrate on his development of Krishna consciousness. तो भगवान की व्यवस्था है जो विदुर जो है वो अपना कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर सके जिसके माध्यम से। And he went on pilgrimage to holy places for 30 years. और वो इस तरह से तीर्थ यात्रा में निकल गए 30 वर्षों के लिए। He went on pilgrimage to hear from the devotees of the Lord about Krishna. That was his purpose. जिससे वो विभिन्न साधु संतों का संग प्राप्त कर सके, उनसे कृष्ण कथा श्रवण कर पाए। And after 30 years he became completely purified. और इस तरह से 30 वर्षों तक भ्रमण करके कथा सुन के वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। In meantime, the Pandavas' exile had taken place, the battle of Kurukshetra was fought, and Krishna, then many years later, end his pastimes. तो इस तरह से वो 30 वर्षों के बीच में जो पांडव थे उनको बाहर निकाल दिया था राज्य से। उसके पश्चात महाभारत का युद्ध भी हुआ और उसके पश्चात कई वर्ष होने के बाद भगवान अपनी जो लीला है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। But before Krishna ended his pastimes, he gave a message to Yadav. भगवान अपनी लीला समाप्त करने से पहले उद्धव को एक संदेश देना चाहते हैं। A message for the sages of Badarika. उन्होंने उद्धव को बद्री धाम के जो साधु हैं उनके लिए संदेश दिया। Because the sages residing at Badri Dham or Badri Ashram, they were eager to meet Krishna and to hear from him. क्योंकि जो बद्री धाम है उसके जो साधु संत हैं भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहते थे। But Krishna had to wind up his pastimes. क्योंकि परंतु भगवान कृष्ण अपने जो लीला है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। And therefore he gave Yadav a message. इसलिए उन्होंने उद्धव को एक संदेश दिया। And that message we find in the 11th canto of the Bhagavatam. और वो जो संदेश है वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में है। And it's called Yadav Gita because Yadav will speak it to the sages of Badarika. और उसको उद्धव गीता बोला जाता है क्योंकि वो उद्धव जी के द्वारा बद्री नाम के जो साधु संत हैं उनको दिया गया है। And when he went to the north, he met Vidura around in the area of Vrindavan. तो जिस समय उद्धव बद्री नाम के लिए जा रहे थे उस समय रास्ते में ही उनकी मुलाकात विदुर से होती है जो कि वृंदावन के आसपास का स्थान है। Yadav has been the close friend of Lord Krishna. जो उद्धव है वो भगवान कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। He was a disciple of Brihaspati. वो बृहस्पति के शिष्य हैं। Brihaspati is the spiritual master of the demigods. जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। And he was instructed by him, and he was very learned. और जो उद्धव हैं वो बृहस्पति के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए बहुत विद्वान हैं। And Krishna took advice from him. और कृष्ण जो है वो कई बार उद्धव से सलाह भी लेते थे। He sent also Yadav to Vrindavan with a message for all the residents of Vrindavan. और इसीलिए कई बार भगवान कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन वासियों के लिए एक संदेश देने के लिए भेजा था। And Yadav was an unalloyed devotee of Krishna.
जो उद्धव है वो भगवान के परम भक्त हैं। And because he was so dear to Krishna, he got his service to transmit his message to the sage of Badarika. तो जो उद्धव हैं वो भगवान के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने उनको बद्री धाम के जो साधु हैं उनके लिए संदेश देने को बोला। But at the time when Krishna spoke this Uddhav Gita, the Uddhav, then also Maitreya Muni was there. जिस समय भगवान कृष्ण उद्धव को ये उद्धव गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय मैत्री मुनि भी वहाँ पे थे। Maitreya Muni was much elderly than Uddhav. जो मैत्रेय मुनि हैं वो उद्धव से उम्र में कई गुना बड़े हैं। Also Vidura was elderly. और विदुर भी, he was elder than Vidura. He was elderly, yeah. Elder than Uddhav. Next, one generation older. तो जो विदुर हैं वो भी बड़े हैं। Because he was the brother of Dhritarashtra. He was The brother of Dhritarashtra. ओके, जो विदुर हैं वो धृतराष्ट्र के भाई हैं। That so Uddhav was quite young compared to Vidura. उद्धव जो है वो विदुर से कई गुना छोटे हैं। Vidura was more, Uddhav was more of the age of Krishna. उद्धव जो है वो कृष्ण के समकक्ष हैं। So they met each other at the source of the Ganges in Hardwar. They met each other at the source of the Ganges in Hardwar. वो दोनों हरिद्वार का उद्गम, जो गंगा का उद्गम स्थान हरिद्वार में उनकी मुलाकात होती है। There Vidura met Maitreya. वहाँ पे विदुर met मैत्रेय। Why did he meet Maitreya? Why did Vidura meet Maitreya Muni? वो मैत्रेय मुनि से क्यों मिले? Because when Vidura saw Uddhav in such an ecstatic mood, he was thinking Uddhav has attained the perfection of life, a love of Godhead, ecstatic love for Krishna. क्योंकि जब विदुर उद्धव से मिले तो उन्होंने एक उनमें बहुत ही उन्माद देखा कृष्ण प्रेम का। So he wanted his guidance, he wanted to accept him as his guru, as his spiritual master. और विदुर उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। But Uddhav said, I cannot do that. लेकिन जो उद्धव ने उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कर सकता। I would commit the offense of Maryada Vyatikram, surpassing a superior authority. और अगर मैं ऐसा करता हूँ, विदुर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूँगा, तो ये वास्तव में एक अपराध है, मर्यादा व्यतिक्रमण का। He said Maitreya Muni is nearby and is much more elder than me, and he also was directly instructed by Krishna before he left his pastimes. तो उद्धव जी ने बोला कि पास में ही मैत्रेय हैं जो कि मेरे से भी उम्र में कई बड़े हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण के मुख से डायरेक्ट श्रवण किया हुआ है। So he's also qualified. You go to him. तो उन्होंने बोला ये भी जो मैत्रेय हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं आपको ज्ञान देने के। Of course, who is Vidura? और विदुर कौन है? Vidura is Yamaraj. विदुर वास्तव में यमराज हैं। Who was cursed by Manduka Muni, जिनको मांडव मुनि के द्वारा श्रापित किया गया था। and therefore he had to take birth as a Sudra. इसीलिए उनको एक शूद्र परिवार में जन्म लेना पड़ा। But he is very most elevated as Yamaraj, very qualified.
यमराज के जैसे ही उच्चतर स्तर पे हैं विदुर। But yes, he meets Maitreya Muni, and now he starts, after offering respect, glorifying him, he starts to prepare for asking questions. यहाँ पे मैत्रेय को ग्लोरीफाइड प्रशंसा करके उसके पश्चात उनसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। He wants to hear from him about Krishna. वो उनसे कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। And in the previous verse, he is glorifying the hearing of the topics about Krishna. और इससे पहले श्लोक में विदुर जो है वो बताते हैं किस प्रकार से भगवान की कथा सुनने का क्या महत्व है। Because if we hear daily about Krishna from the Bhagavatam, अगर हम नित्य रूप से भागवतम से भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, what is the result? उससे क्या परिणाम होगा? We will become attached to Krishna. हम भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे। And if we become attached to Krishna, we become indifferent to everything in this material world. और अगर हम भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे तो इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से विमुख हो जाएंगे। So to become Krishna conscious means coming to the level of constant remembering Krishna. कृष्ण भावनाव्रत के स्तर पे आने का अर्थ है कि हम सर्वदा हर क्षण कृष्ण का स्मरण कर सकें। But what's the problem? परंतु समस्या क्या है? We don't have taste to hear about Krishna. People want to do something else in this world. हम में कृष्ण कथा श्रवण करने की रुचि नहीं है। हम कुछ और करना चाहते हैं इस भौतिक जगत में। And why is this? और ऐसा क्यों है? The same with the chanting of the holy name. We don't have great taste to chant. Why is this? हरि नाम के साथ होता है। हमें हरि नाम करने में ज़्यादा रुचि नहीं है। Haridas Thakur explains to Lord Chaitanya. हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। This is recorded in Harinam Chintamani. ये हरिनाम चिंतामणि में वर्णन किया गया है। It said the cause why we don't have taste is anarthas. हमें क्यों भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, उसका कारण है अनर्थ। Especially the anartha coming from previous sinful activities. विशेषकर कि वो अनर्थ जो कि हमारे पूर्व पाप कर्मों के कारण आ रहे हैं। That's called asat drishti. जिसको बोला जाता है असत तृष्णा। Having taste for dead things in this world. Having taste for dead things in this world. इस भौतिक जगत में उन असत वस्तुओं के प्रति आकर्षण। That's asat drishti. And that comes from previous sinful activities. जो कि पूर्व पाप कर्मों के कारण आती हैं। And that's in the purport here. Srila Prabhupada speaks about third class, second class, and first class man. और इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में तीन तरह के लोगों का वर्णन करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। And the third class, Srila Prabhupada says, are those who are in a mode of passion and ignorance. थर्ड क्लास वो हैं जो कि रज और तमोगुण में हैं। So the mode of passion means the desire to enjoy dead things in this world. रजोगुण का अर्थ क्या है? इस भौतिक जगत में बुरी चीजों का उपभोग करना या भोग करना। That's what the mode of passion causes in our heart. और ये रजोगुण के कारण होता है। That we want to enjoy this body, हम इस शरीर का भोग करना चाहते हैं, which we are not. जो कि हम हैं नहीं वास्तव में। This is insanity, illusory. ये प्रमादता है, ये मोह है। And the more taste for enjoyment in this life we had, the more difficulty to practice Krishna consciousness. हमें इस भौतिक जगत में जितना भोग करते हैं या जितना आकर्षण होता है भोग करने का, उतना ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कठिन हो जाता है।
No interest in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है। These people are completely bewildered. इस तरह के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से भ्रमित रहते हैं। It's in Bhagavad Gita in 269. भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में बताया गया है। There it describes that the self-realized sage ये बताया गया है कि एक जो self-realized sage मुनि होता है, what's for him daytime is night for those in the mode of ignorance and passion. और जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ साधु होता है वो उसके लिए जो रात्रि है, जो भौतिक जगत के लोगों के लिए दिन है, वो उसके लिए रात्रि है। So day becomes night, night becomes day. उनके लिए दिन रात हो जाता है और रात दिन। In 94, I was in Belgium in a city called Ghent. मैं 1994 में बेल्जियम में एक शहर है, What is the name of it? Ghent. Ghent एक सिटी है बेल्जियम में, वहाँ पे था। And there we were in the center of the city, और वो शहर के बीचों बीच था, where the Naam Hatha Center. जहाँ पे नामहट्ट केंद्र है। And I was living there with one devotee. और मैं वहाँ पे सो रहा था एक भक्त के साथ। And in the morning, in the ashram on 3:30, we would wake up हम आश्रम में 3:30 बजे उठने जा रहे थे। and we would open the windows. It was summertime. It was summertime. We would open the windows. ये ग्रीष्म काल था। And at the other side of the street, there was a nightclub. और खिड़की के दूसरी तरफ एक नाइट क्लब था। We opened the windows and they opened the door. तो जैसे हमने अपने खिड़की खोल दी, उन्होंने अपने दरवाजे खोले। And at the other side, out of this door came first some smoke. जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ से अंदर से खूब धुआं आ रहा था। And then people came out who were walking not straight. उसके बाद उस धुएं के पीछे लोग आने प्रारंभ हुए जो कि सीधे भी नहीं चल पा रहे थे। They were going to sleep. और वो सोने जा रहे थे। We waking up. और हम जगने जा रहे थे। So that's the difference. तो ये अंतर है। Therefore, to come out of this ignorance and passion, तो इसीलिए ये रजो और तमोगुण से बाहर आने के लिए devotees must follow the four regulative principles. Stop sinful activities. इसीलिए भक्त लोगों को 4 नियम के पालन करना चाहिए और पाप कर्म करना बंद करना चाहिए। And adopt a life of goodness. और एक सतोगुण का जीवन ग्रहण करना चाहिए। Get up early in the morning, take a bath, meditation, japa. सुबह जल्दी उठना, नहाना, ध्यान करना, जप करना। If one does not adopt that lifestyle, this taste will not come. अगर कोई इस जीवन को ग्रहण नहीं करता है, इस लाइफस्टाइल जीवन शैली को ग्रहण नहीं करता है तो वो भक्त नहीं बन पाएगा। Yeah. So I was giving lectures to the students yesterday. और मैं कल छात्रों को उपदेश दे रहा था। And one devotee said, yes, I'm getting up early, I'm chanting 4 rounds, but then after the program I feel so tired. मैं सुबह उठता हूँ, जब करता हूँ 4 माला और 4 माला करने के पश्चात मुझे बहुत थकान लगती है, नींद आती है। Yes, it takes a time to go in that routine. हाँ, इसमें समय लगता है इस तरह का जीवन शैली को ग्रहण करने में। To get early up in the morning, you must learn to go early to bed. अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो रात में जल्दी सोना भी सीखना पड़ेगा। It's a lifestyle. ये जीवन शैली है। When Bhakti Maharaj told us, when he joined Mayapur, भक्ति स्वामी महाराज मुझे बता रहे थे जब मैंने मायापुर में ज्वाइन किया था, at home he was used to sleep till 8-9 o'clock in the morning. तो उनको आदत थी सुबह 8-9 बजे तक सोने की। But then in Mayapur he had to get up before 4 o'clock. और मायापुर में उन्हें 4 बजे से पहले उठना होता था। And he said in the beginning it was so difficult. और उन्होंने बताया कि ये शुरुआत में बहुत कठिन था।
But he said the devotees were so merciful लेकिन भक्त इतने कृपालु थे at 4 o'clock in the morning to lift me out of the sleeping bag. तो वो मुझे सुबह 4 बजे पैर खींच के उस बिस्तर से बाहर निकाल देते थे। But he said many years later, he said, now I get up before my alarm clock in the morning, spontaneously. बोलते हैं कि अब मैं बिना अलार्म के ही सुबह उठ जाता हूँ, अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। So it takes a time to get over it. इसमें समय लगता है। But these are in the mode of ignorance and passion. Those in the mode of ignorance and passion, they have difficulty to accept the existence of Krishna. जो लोग रज और तमोगुण में रहते हैं उनके लिए कठिन होता है भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण की स्थिति को जानना। That's due to ignorance. ये वास्तव में तमोगुण के कारण है। They don't have the intelligence to understand it. उनको भगवान को समझने में कोई रुचि नहीं होती है। Yeah, it is said that lust avitam jnanam etenam jnaninam nityavarigam kamrupina kantya dusprananalenasha. The lust covers one's intelligence. भगवद गीता श्लोक में बताते हैं अमृतम ज्ञानम एतेन, श्लोक में बताते हैं इस प्रकार से जो जीव की जो बुद्धि है वो काम वासना के द्वारा आच्छादित हो जाती है। So it covers one's intelligence, and by that one cannot understand spiritual subject matters. और उसकी बुद्धि काम वासना के द्वारा आच्छादित होने के कारण वो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ पाता। Spiritual subject matters can only be understood theoretically by the brain, by the intelligence. ज्ञान है वो खाली बुद्धि के स्तर पे नहीं ग्रहण किया जा सकता। By material intelligence, one cannot understand भौतिक Krishna. बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। Krishna is transcendental. Krishna is transcendental. जो भगवान है वो चिन्मय है। By intelligence means logic. इंटेलिजेंस बुद्धि का अर्थ होता है लॉजिक। With logic, you cannot understand Krishna. लॉजिक युक्ति, तर्क से आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। But Krishna is translogical. कृष्ण जो है वो उच्चतर तर्क से समझे जा सकते हैं। But they think that when one is in the passion and ignorance, is if devotees explain some things about Krishna, they will say it's illogical. इसीलिए जब भक्त समझाने का प्रयास करते हैं कृष्ण के बारे में तो रजो और तमोगुण के व्यक्ति बोलते हैं कि ये अतर्कपूर्ण है। Because they are used to think in terms of material laws. क्योंकि वो उनकी बुद्धि भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही सोच सकती है। But Krishna is beyond that. परंतु कृष्ण तो उससे परे हैं। And to understand what's beyond, one can only understand it to the soul, to the heart. भगवान को सिर्फ आत्मा के स्तर पे समझा जा सकता है। The soul is in the heart. जो आत्मा है वो हृदय में रहती है। How did Brahma receive transcendental knowledge? ब्रह्मा जी ने कैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था? Tene Brahma Hridaya Adikavaye. He's an Adikavi, original poet, and he received this knowledge from Krishna through the heart. He received the Bhagavatam Chaturshloka. So ब्रह्मा जी ने कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था उनको, उन्होंने हृदय में उसको ग्रहण किया था और वो भागवतम के चतुश्लोकी गीत है, चतुश्लोकी गीत भागवतम। So that is how we acquire transcendental IQ, transcendental intelligence. तो इस प्रकार से हम चिन्मय बुद्धि प्राप्त करते हैं। Can only be given by Krishna, who reveals himself. ये सिर्फ कृष्ण के द्वारा ही दी जा सकती है। Dadami buddhi yogantam. He gives this to the heart, these realizations of transcendence.
ये जो ज्ञान है ये भगवान के द्वारा जीव के हृदय में प्रकाशित होता है। So then these are third class men. The second class men are those who think that the supreme Brahman, that Brahman is supreme, God is impersonal. The second class, third class लोग हैं वो भगवान के निर्विशेष जो रूप हैं उसको श्रेष्ठ मानते हैं। That, and they see that hearing about Krishna, that is a way for us to get to Brahman. तो वो सोचते हैं कृष्ण के बारे में सुनना ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए है वास्तव में। So, and but they misuse the Krishna Katha finally to kill Krishna. हाँ, वो कृष्ण कथा का दुरुपयोग करते हैं कृष्ण को मारने के लिए। That's very offensive. ये वास्तव में एक अपराध है। And they will never reach what they desire. और वो कभी भी जो वो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। But then many of them are situated in goodness or some level of goodness. कई लोग उनमें से सतोगुण के स्तर पे रहते हैं। But when one really is situated in goodness, goodness is illuminating, Krishna says, gives us a view of what's really going on, of reality. तो जो सतोगुण है वो प्रकाशमान है और वो दर्शन करा सकता है कि वास्तविकता में क्या हो रहा है। So therefore, devotees, they live in the mode of goodness. इसीलिए जो भक्त हैं वो सतोगुण में जीवन जीते हैं। If we are in the mode of goodness, we understand reality theoretically. अगर हम सतोगुण में अपना जीवन नहीं जिएंगे तो हम कभी भी जो वास्तविकता है उसको नहीं जान पाएंगे। So when we situated on that platform is on the platform of Vijnan. इसीलिए हमें विज्ञान के स्तर पे आना पड़ेगा। But from the Vijnan platform, one must come to the platform of the soul, transcendence. तो विज्ञान के स्तर से हमें आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। So the platform of transcendence is the platform of spiritual bliss. जो चिन्मय स्तर है वास्तविक वो आनंद का स्तर है। Yeah, Anandamoya, spiritual bliss. आनंदमय मतलब spiritual bliss. But if we are situated in goodness and we hear the Bhagavatam, then we understand the process how to go from the mode of goodness, from sattva to Suddha sattva, to pure goodness. अगर हम सत्वगुण में हैं और भागवतम का श्रवण करते हैं तो हम जान पाएंगे एक विधि को सीख पाएंगे किस तरह से सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाया जाए। If we become pure devotees, we are situated in Suddha sattva. अगर हम शुद्ध भक्त हैं तो हम शुद्ध सत्व के स्तर पर रहेंगे। Then there is no need to be convinced about Krishna's position at that moment. तो हमें उस स्तर पे ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण का क्या स्तर है। Because we have full realization. क्योंकि हमें पूर्ण रूप से इसका साक्षात्कार है वास्तव में। So these are the pure devotees of Krishna. तो ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। And what do they want to do? और वो क्या करना चाहते हैं? They want to hear about Krishna. वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। That is what they want. बस वो यही करना चाहते हैं। So it means hearing about Krishna is the means and the end. उनके लिए कृष्ण के बारे में सुनना ही वास्तव में साध्य और साधन दोनों ही हैं। The Machita Machachapana Bodhe Antaskadam Prashparam Katyan Samamnitam Nityukta Upashate. The great devotees, they are always speaking with each other about Krishna. भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मत चिंता मत व्यथाना, जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करना चाहते हैं, मेरे बारे में बोलना चाहते हैं। And we have here Vidura and Maitreya Muni. They are both qualified to speak and to hear about Krishna. मैत्रेय मुनि और जो विदुर हैं वो दोनों ही योग्य हैं कृष्ण कथा सुनने और बोलने के लिए। Now
rest of the third canto and fourth canto, we will hear about their conversation. And just by hearing about their conversation, we become purified. Surely, we come to goodness, and when we are completely purified, to transcendence. And we come to the platform of Anandamoya. But Vidura and Maitreya are both already on that platform. Vidura and Maitreya Muni are both on the platform of Anandamaya. They reached already the perfection. But it is for our sake that they have this conversation. So that we can become purified. So, and in the next verses, from verse 18 onwards, Maitreya Muni will start to speak. Hare Krishna. Any comments or questions? Hare Krishna. My question is, what is the difference between anartha and path, and how can? What is the difference between anartha and sin? Anartha and sin. Okay. Yeah. So how can we reduce both of them to take higher taste of Harinam? मेरा सवाल ये है कि हम पाप और अनर्थ में दोनों में क्या अंतर है और इसको कैसे कम कर सकते हैं ताकि हम हरिनाम का और स्वाद ले सकें, उसका अनुभूति कर सकें. Okay. Thank you. There are different kinds of anarthas. There are anarthas coming from past sinful activities. That's the first kind. The second kind are anarthas coming from previous pious activities. And then we have anarthas which come from offenses against the holy name, offenses. Namaparat is one of them. And the fourth kind of anartha is seva aparat, is the imperfect practice of bhakti. So these are four kinds of anarthas which in our heart. By anartha nivritti, or the stage in which our anarthas become destroyed, eradicated, is attained if we give up our offenses. The most heavy offenses is nam aparat. There are 10 offenses against the holy name, which are forms of disrespect. Disrespecting the devotees. Disrespecting the spiritual master by not following his instructions.
disrespecting the holy name or disrespecting Krishna, thinking the holy name of Krishna is imagination. ना भगवान के प्रति अपराध, भगवान नाम के प्रति अपराध, ये सोच करके जो भगवान का नाम है, जो भगवान के नाम के जो गुणगान है वो इमेजिनेशन काल्पनिक है. Or chanting Hare Krishna to get material benefits, that's misusing the holy name. और हरि नाम का उपयोग करना अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए. As long as these forms of disrespect are in the heart, then this anartha nivritti will not really take place. जब तक इस तरह के असम्मानपूर्ण हमारे हृदय में भावनाएं हैं हरि नाम के प्रति, तब तक हम कभी भी अनर्थ निवृत्ति की जो स्तर है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे. But if we daily hear the Bhagavatam परंतु अगर नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे and become really absorbed and start to practice what's in the Bhagavatam, वास्तव में अपने आप को श्रीमद् भागवतम के निर्देशों में डुबा लेंगे, उसका पालन करेंगे, these bad attitudes in the heart will gradually be removed. और ये जो हमारे हृदय में असम्मानपूर्ण जो मनोभाव है वो दूर होगा. And we will be able to gradually overcome this nama parad. और हम धीरे करके ये जो नाम अपराध की जो स्तर है उससे बाहर आ पाएंगे. Therefore, Srila Prabhupada has given us these books. इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये पुस्तकें दी हैं. He said to his disciples, "Why am I translating these books? वो अपने शिष्यों से बोलते थे कि मैं इन पुस्तकों का क्यों अनुवाद कर रहा हूँ. It's for you to read. ये आपके लिए है, आप इसको पढ़ें. If you don't read my books, go avahya. You are committing offense to the spiritual अगर master." आप मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं तो ये गुरु अवज्ञा है और आपको उसका अपराध लगेगा. So we should very regularly read the Bhagavatam. इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए. If you read every day one verse, 10 verses and purports, if you read every day 10 verses and the purports, अगर आप नियमित रूप से 10 श्लोक और उनका तात्पर्य पढ़ते हैं, in 4 years you read the whole और Bhagavatam. आप 4 साल में पूरी भागवतम पढ़ लेंगे, It will change your heart. आपका हृदय इससे परिवर्तित हो जाएगा. And then your chanting will become purer. और इससे आपका जो जप है वो शुद्ध हो जाएगा. And then these anarthas will go. और इस तरह से ये अनर्थ चले जाएंगे. The seva parat is not so serious. जो सेवा अपराध है वो इतना कोई गंभीर नहीं है. As long as you do continuously devotional service. जैसे जैसे आप सेवाएं करते हैं And you do not do it intentionally. और आप जानबूझ के इनको नहीं करते हैं. Because when you do it intentionally and you don't correct it, it becomes nama parat. Then it becomes आप serious. उसको जानबूझ के करते हैं, सुधार नहीं करते हैं, तो वास्तव में नाम अपराध के रूप में प्रकाश होता है. So these are basic principles. तो ये कुछ It's much, basic principle है. much more to say about और it. इसके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है. Is that helpful? Thank you. Good. Okay, good. Thank you. I was very happy to be with you. I hope it has been a bit useful. That Yantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Swami Maharaj ki. Krishna, we are very thankful to Maharaj to give our transcendental association. Maharaj will be here till 10:30. We will be here for question and class. We can and meet Maharaj. Hare Krishna. Prabhupada ki.